We're at the second edition of the India Energy Week, and who better than the Union Minister for Petroleum and Natural Gas, Mr. Hardeep Singh Puri, joining us for a special interaction. Thank you for your time, sir. Thank you. I'd like to begin by asking you that we have seen throughout this week, really, Prime Minister Modi also saying India is with the world and for the world. We've seen several innovations. We have seen the first ever indigenous alkaline electrolyzer, many startups really taking center stage. So really, India leading this collaboration for sustainable development and a greener future. You're absolutely right. I think some of the things you mentioned literally stand out. If you have a domestically manufactured electrolyzer, I would also add the cost of which is 30% less than what a similar electrolyzer imported would cost. But I would say something more. We are, and we have demonstrated the capacity to do more of these in a short period of time. So that is, I think, the real success story. Secondly, we gave a big boost to ethanol blending. We are already at 12%. Indian Oil is setting up 400 dispensing stations in four states. And I think in a matter of time, E20, the Honorable Prime Minister announced at Bengaluru in April last year, and he himself said 9,700 stations are selling E20. And this will go up. I think no matter which way you look at it, domestic exploration and production, our biofuel story, our compressed biogas story, our green hydrogen story, India is on the move. But the Indian approach is what I think deserves to be acknowledged and commended. The Prime Minister says India is with the world and India is for the world. And he said we need to cooperate in cutting-edge technologies, and we will cooperate. So I think that is the fine print, and which is a message which has resonated. Large number of ministers with whom I've had roundtables, people whom I've had met bilaterally, they're all wanting to participate in the India story. That is, I think, the message. Right, and all our viewers sitting at home wondering, okay, what are the near-term changes we will see for the green energy transition, the three focus areas really in the near term? होता क्या है कि आप देखते हैं जब भी कंटिन्यूटी होती है और कंटिन्यूटी के बीच में चेंज होते हैं, लोगों को शायद ये चीज़ एकदम दिखती नहीं है, पर आप उनको याद कराएं कि पिछले साल अप्रैल से लेके अभी तक E20 ब्लेंडेड फ्यूल अब 9,700 स्टेशन में मिल रहा है, और कुछ आने वाले समय में आपके सामने ये भी हो जाएगा कि कुछ स्टेशन में सिर्फ एथेनॉल के बंक्स में होगा. तो चेंज तो वो है, बट उसके अलावा अगर आप सेकेंड जनरेशन का एथेनॉल प्लांट बनाते हैं पराली से, तो आपके यहाँ पराली जलाना बंद होगा, एग्रीकल्चरल वेस्ट से बना रहे हैं. उससे क्या होगा, दिल्ली में आप और हम रहते हैं तो वहाँ पे जो चोकिंग होती है एज अ रिजल्ट ऑफ पराली बर्निंग इन पंजाब, उस पर कम होगा. अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी के साथ था, बदायूं में हमने एक HPCL का प्लांट लगाया है, उसकी इनॉग्रेशन की है, जो कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएगा अगेन फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट, फ्रॉम राइस हस्क. तो बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है. और देखिए, आप एनर्जी ट्रांजिशन ग्रीन की तरफ जाती हैं, उसमें फ़ायदा है, उससे हमारे किसानों को फ़ायदा है, और बाकियों के लिए आप देखिए उज्ज्वला योजना, आप देखिए E20, आप देखिए कंप्रेस्ड बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले समय में उसकी वाइड एक्सेप्टेंस होगी. और ऐसे जैसे इलेक्ट्रोलाइजर, कितनी देश हैं दुनिया में जो इलेक्ट्रोलाइजर बना सकते हैं. दैट इज़ द इशू. Absolutely. India has also signed the largest ever LNG deal with Qatar. Could you take our viewers through those details for the 20-year period? I'll tell you, we already had a long-term deal with Qatar, which was till 2028. And we just signed, and we announced that we have signed a further long-term deal for another 20 years with Qatar after 2028. And I think this is something which will be part of the country's, Bharat's energy transition, and it's a very good deal in terms of both availability and the commercial aspects. Right. Now, the Indian economy has also remained resilient through geopolitical tensions, really, and we have seen concerns on the rise as far as the Red Sea attacks are concerned more recently. So, in your words, India is concerned, but there's no need for a panic mode. Well, I would put it slightly differently. India's success is ultimately going to be measured by how we grow. और पिछले 3 क्वार्टर में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वी हैव ग्रोन एट 7.6%. मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप के साथ चौथा क्वार्टर के रिजल्ट भी उतने ही अच्छे होंगे.
अगर वो होता है तो हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है दैट इज़ वेल नोन। बाकी जो रेड सी में होता है या कहीं और होता है, नॉन स्टेट एक्टर्स जो भी करते हैं, मैं तो यही कहूँगा एंग्जाइटी है, कंसर्न थोड़ा सा है। हम यही चाहते हैं कि ये चीज़ बढ़े नहीं, देयर शुड नॉट बी आउट ब्रेक on of hostilities on a large scale, and if things remain under control, I have no doubt that we'll be able to navigate past this. All right, and what are the lessons lastly that the world can learn from Iceland leading green energy transition, and what do you think we can sort of learn from them? No, India is a sui generis case. India is a country which has done a lot of its domestic thing. देखिए बायोफ्यूल स्टोरी, बायोफ्यूल्स की शुरुआत कहीं और से हुई, पर मुझे तब भी कहा जाता था जब मैं ब्राज़ील में राजदूत था कि अगर इंडिया बायोफ्यूल्स को ज्वाइन कर लेती है तो आप ये समझिए आने वाले टाइम में बायोफ्यूल्स जो हैं दे कैन बिकम एन इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में G20 के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनी है, बहुत कंट्रीज़ इंटरेस्टेड हैं इसमें। सिर्फ कंट्रीज़ नहीं, इसमें इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स, ग्रेन एसोसिएशंस, अदर एसोसिएशन, दे ऑल वांट टू जॉइन इन, एंड उनके सबके सहयोग के साथ ये बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में, और यहाँ पे भी जो चर्चा हुई है, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से खास करके बहुत बूस्ट मिलेगा। Sure, and lastly, just one last question, sir. Many sitting at home saying, okay, we have long-term targets, we have the 2030 target, we have the 2070 target as well. So what are the really long-term focus areas that we must look at to achieve these targets and see the discussions that have happened throughout this week into action plan? देखिए, there are action plans already there. What do countries look at? Availability, no problem. Affordability, prices have come down. So you might say कि affordability में थोड़ा और अगर कम हो तो घर में बैठ के लोग तो वही जिनके पास समय थोड़ा एक्स्ट्रा होता है तो वो भी होगा अगर अगले क्वार्टर की भी टर्निंग अच्छी रही है, रेड सी वाली समस्या बढ़ी नहीं, और अल्टीमेटली ट्रांजिशनिंग, सस्टेनेबिलिटी, तीनों फ्रंट में बढ़िया हो रहा है। और उसके टारगेट्स तो हैं, बायोफ्यूल 2030 तक करना था, अब 2025 तक कर देंगे। कंप्रेस बायोगैस के 100 प्लांट है, 100 हम और लगा रहे हैं और इसको ऊपर ले जाएंगे। रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारे पास 252 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है, इसको लगा जाके माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 450 तक ले जाएंगे। सो वी आर डूइंग वेल ऑन ऑल फ्रंट्स। All right. Thank you so much for taking out the time and for this interaction. The Union Minister of Petroleum and Natural Gas telling us that, look, India is clearly achieving those goals and those targets and on the path really to show the world that we are taking this very seriously, leading collaboration as it were. And this is what, of course, a greener future and sustainable development will be all about. With camera person Azam Siddiqui, Sakshi Bajaj in Goa for NDTV.